कार्यक्रम में हमने पूरे प्रदेश में के 22,960 विद्यालयों में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया, जिसमें 68,880 बच्चों को आयुष की विधा के बारे में जागरूक किया। 59,448 ग्राम पंचायतों की खुली सभा में आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहने, आहार विहार, योग और औषधि पौधों के घरेलू उपयोग के बारे में शिक्षित किया। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेरे जीवन में आयुर्वेद विषयक संगोष्ठी हमने 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों में कराया, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चों ने भाग लिया। इस तरह से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश निरंतर आपके इस मिशन का भागीदार है। हम बधाई देना चाहते हैं आयोजकों को। आपने उत्तर प्रदेश के एक आयुष मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम में आप सबने भाग लेने का अवसर दिया। एक बार फिर से आप सभी को हृदय की गहराई से इस अत्यंत सफल और शानदार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य योग के द्वारा कार्यक्रम में मुझको आमंत्रित करने के लिए आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. I now request Shri Sunil Ambekar, Mentor, Vignan Bharti, to speak a few words. आज इस 9वें वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस में उपस्थित गोवा के मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद सावंत, श्रीमान श्रीपाद नाइक जी, पंजाब के श्री चेतन जी, उत्तर प्रदेश के श्री दयाशंकर जी, गोवा के और भी कई सारे मिनिस्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, और विशेषकर आयुर्वेद क्षेत्र के जिन्होंने अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से आयुर्वेद की साख को, उसकी क्रेडिबिलिटी को बना के रखा है, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और आयुर्वेदिक क्षेत्र के बहुत सारे विद्वज्जन यहाँ हैं। सभी को प्रणाम, सभी को अभिवादन। ये वास्तव में उस आयुर्वेद की शुद्ध परंपरा को पुनः जागृत करने का एक बहुत बड़ा अभियान है। और ये अभियान की विशेषता ये मुझे अनुभूति में आ रही है कि इसमें सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकारें, उत्पादक, उसके प्रैक्टिशनर्स, सारे वैद्य, उनके विद्यार्थी और बहुत सारे हितैषी जो भारत की इस महत्वपूर्ण धारा को आगे बढ़ाना चाहते, वो सारे एक साथ जुड़े हैं। तो वास्तव में ये एक भारत के पुनर्निर्माण का, भारत को आगे बढ़ाने का एक महत् प्रयास है। और इसीलिए मैं इस प्रयास को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात यह है कि कई बातें थी भारत में जिसके बारे में ऐसे लोगों को लगता था कि शायद वो अभी फिर कभी ऊपर नहीं उठेगी, परंतु देखते देखते स्वाधीनता के 75 वर्ष आते आते एक पूरे दुनिया में और पूरे देश में भारत के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसी बातें दुनिया में उभर कर आ रही है, जिसमें योग का उल्लेख हो सकता है। और आयुर्वेद अब तो पूरी विश्व में कोरोना के पश्चात इसके बढ़ती आकर्षण और समझ बढ़ी है। और इस दृष्टि से ये बात, जैसा मैंने उल्लेख किया कि भारत में जो भी ज्ञान पूर्व काल में कभी भी विकसित हुआ, वो ऊपर ऊपर से नष्ट होता हुआ या नीचे जाता दिखता है, परंतु ऐसे बहुत ऐसे अज्ञात साधक इस देश में हैं कि जो लोग
बिल्कुल उस बात को संजो कर रखते हैं। और जैसे किसी बीज को कहीं दबाकर रख दिया हो, वैसा जैसे जैसे ये आयुर्वेद कांग्रेस जैसे उत्सव सामने आ रहे हैं, वो सारे बीज और उनके वृक्ष सामने निकल कर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये एक केवल हमारे कुछ सुविधा के लिए आयुर्वेद नहीं है, तो वास्तव में एक मानव कल्याण के लिए एक बहुत ही सुंदर ऐसा एक मार्ग है। इस दृष्टि से ये उभर कर आ रहा है, ये हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और इसलिए हम लोगों के इस प्रयास को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम केवल अपना नहीं तो पूरे मानव जाति के कल्याण हम कर सकते हैं। और एक बात, महत्वपूर्ण बात का मैं उल्लेख यहां करना चाहूंगा। सभी आयुर्वेद के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत का जो जुड़ाव है आयुर्वेद से या हमारी हर ज्ञान परंपरा से, उसके जुड़ाव को इसमें महत्वपूर्ण आग्रह के रूप में रखना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी बात की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में तो मुझे लगता है शुद्धता के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके गुण उसकी शुद्धता पर ही आधारित है। और इसलिए अगर मूल आयुर्वेद के ज्ञान को शुद्ध रखना है तो मुझे लगता है कि संस्कृत का बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमारी भाषा का जुड़ाव, अब तो इंजीनियरिंग, एलोपैथिक मेडिसिन, सभी बातों से भारतीय भाषाओं का जुड़ाव का आग्रह चल रहा है। तो आयुर्वेद में इसको विपरीत दिशा में नहीं तो इसी दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह बढ़ना चाहिए। मैं राजेश जी से कहना चाह रहा था कि पूरे बोर्ड पर देवनागरी में संस्कृत में कोई एक वचन अगर आ जाता है कम से कम 3 दिन में, आखिरी दिन तक, तो बहुत अच्छा होगा। और ये जुड़ाव हमारा रहना चाहिए और स्पष्ट रूप से व्यक्त भी होना चाहिए। और एक बात, अंतिम बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग, सामान्य लोग, उनको भी आयुर्वेद के बारे में उत्सुकता जागृत हुई है। इसलिए आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में एक हम लोगों की जो परंपरा है कि घर में भी कई लोग जानते हैं, अब वो ज्ञान घरों में भी कम हो रहा है। तो साथ साथ आयुर्वेद के सामान्य नुस्खों के बारे में जागरण का जो अभियान है, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी यहाँ सहभागी है तो वो अपने कॉलेजेस से इस बात का एक अभियान चलाएं। और एक मुझे लगता है कि कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक पूरा ऐसा एक इंटर्नशिप जैसा रहना चाहिए। कंपटीशन भी कर सकते हैं कि अपने घर में या अपने परिसरों में नॉन आयुर्वेद के उपाय जो घरों में परंपरागत तरीके से करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, जो जितना अच्छा करेंगे उसकी कंपटीशन। तो मुझे लगता है इससे हम बहुत सारी चीज़ों का जागरण भी करेंगे, नई पीढ़ी को इससे जोड़ेंगे भी और इसका महत्व भी सामने आएगा। तो ऐसी कई बातें हैं, बहुत सारी बातें अच्छी हो रही है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Sunil Ambekar ji. Now, with much honor, I would like to call on stage, who is amongst us, Honorable Minister for Arts and Culture and Sports, Government of Goa, Shri Govindji Gowde, to deliver his speech. It's a very proud moment to the state of Goa for hosting this 9th World Ayurveda Congress and the Expo under the able leadership of Honorable Chief Minister of Goa in the support of the Vigyana Bharati and the Ministry of Ayush. Being as Art and Culture Minister, I welcome you in the tiny state with the big heart, because you all know that the Goa is very famous as far as the hospitality is concerned. Especially the foreign delegates who have come to attend this 5-day expo. I only would like to congratulate to the
Vijnana Bharati and the Ministry of Ayush and all the volunteers who are involved in organizing this event and the expo to a great to reach at the greater heights. Very important thing is that the awareness is very important to take this Ayurveda to a greater heights. Unless and until there is no awareness, it is very difficult us to understand the common person to what is the importance in the Ayurveda. And that's why I treat you all as an amazing personality who have been here in this Shamiana or the Sabhagruha. I'm just comparing the amazing and the ordinary words why I've uttered. Ordinary words, people where the thought process has get to an end, and the amazing people from that point, these amazing people start thinking from the different direction. And it is our duty and it is a combined effort we have to always put together to make this the program to a great success. Not only that, Honorable Prime Minister Adarani Narendra Modi has already said that unless and until we are not going to have the awareness program throughout the each and every corner of the country or the world, it's very difficult to know the whereabouts about the importance of the Ayurveda. I thanks to each and everyone whoever present over here, and it's very difficult to organize the event like this and that to an international standard. But under the able leadership of the Honorable Chief Minister, by taking almost all the volunteers, all the colleagues from the cabinet as well as the office to a to make this function a great success. I wish all the best to each and every delegates who have come from the nation as well as who have internationally flown to the state of Goa. And I wish all the pleasant stay, a comfortable stay in the state of Goa. Thank you one and all for listening patiently. Jai Hind, Jai Goa. Thank you so much, sir, for this energetic speech. Thank you once again. We are pleased to have with us Honorable Health Minister, Government of Goa, Shri Vishwajit Rane ji. He takes special efforts regarding the field of health in Goa. New initiatives, new projects in the field of health are pioneering because of Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane ji. May I request him to speak a few words on this occasion as Health Minister, Government of Goa. Honorable Chief Minister of Goa, the Chief Guest, respected Chief Guest for today's 9th Ayurvedic Congress and Arogya Expo being held here in Goa in association with the Government of India, Ayush Ministry. We miss the presence of Sonal ji here today. And I would have liked to also welcome dignitaries who have especially come and my colleagues, Shri Chetan ji from Punjab, Honorable Health Minister of Punjab, Shri Dayashankar ji, Honorable Minister for Health, Government of Uttar Pradesh, my colleague in the Cabinet, Shri Govind Gowde ji, Honorable Secretary, Government of India, Shri Kotecha ji, Ambekar ji of the Vijnana Bharati, who has played a very important role on the sidelines along with the Government of India and the Ministry of Ayush. I forgot to take our senior leader and the main person who actually brought Ayush into the state of Goa is Shripad Naik ji, who during whose tenure and with the leadership of our Chief Minister, we were able to take the Ayush Institute forward. I don't want to say much because Ambekar ji has already mentioned. I heard about him and it's a great pleasure being sharing a dais with him here today about the propagation of the science of Ayurveda. We are proud to have amongst us the Chief Minister who also is a doctor and who practices the science of Ayurveda. And also the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, which has given a global presence to the science of Ayurveda and the utilization of Ayurveda globally. Today people all over the world take this science very seriously
And I had talked to Kotecha ji some time back, where we said that we would like to be, being a small state, we would like to do the convergence and we would like to move ahead in the direction and the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and take and have one of the first states in the country to have these combined OPDs and have treatment protocols, what you wish and what you desire. And I think we are moving in that direction. I don't want to say much, but I would like to welcome each and every one of you globally and from our country who have come specially for the World Ayurvedic Congress with the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and with the Vigyan Bharati, which has played a very important role in bringing this to this level and to the reaching the 9th World Ayurvedic Congress and Arogya Expo, and the Ministry for Ayush, which is playing a very dominant role today in propagation of Ayush. And for the first time, Ayurveda is being taken seriously, and there are expos and there are conferences, there are interactions, and also globally people are carrying out different types of research on the science of Ayurveda, and we are getting to know about it. In this small state of Goa, we would like to, under the leadership of the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, today we are very happy to be a partner with the Vigyan Bharati and the Ayush Ministry and to host this 9th World Ayurvedic Conference in Arogya Expo. With his leadership, I am sure we'll be able to make more strides in taking Ayurveda and also creating this wellness and holistic medicine approach. And Goa, I'm sure, will lead the way and take it forward by being a small state, being a beautiful state, and taking it in a different way in line with the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I don't want to take much time. Everyone has said a lot, and I would like to conclude by once again welcoming you, and I would like to also request Kotecha ji to give us new ways forward in the science of Ayurveda, new ways and techniques where we can do this convergence model in a very successful way. And I would like to thank the Honorable Chief Minister for always being supportive to all of us, and thanking the Government of India for selecting Goa as a destination for this 9th World Ayurvedic Congress and Arogya Expo. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Before we move on to last two speeches, we have two more events. Ministry of Ayush has taken an important initiative to increase awareness about medicinal plants amongst children. A comic book series with Professor Ayushman as the central character, conceived by the National Medicinal Plant Board, Ministry of Ayush, was unveiled to make children aware of the importance of medicinal plants and their use in home remedies. NMPB has released the first two series of comics, Professor Ayushman, and this comic book is helpful for educating children and others about traditional healthcare. In this series of comics, medicinal plants like aloe vera, tulsi, amla, giloy, neem, ashwagandha, brahmi, these are covered. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji also appreciated this effort by Ministry of Ayush. May I request Honorable Chief Minister of Goa to release the third edition of Professor Ayushman. Before that, I would like to call upon stage CEO NMPB to come on stage, Dr. Tanuja Nesri, who is also a director of this particular project. And I request volunteers and officials from National Medicinal Plant Board to hand over copies of the third edition of Ayushman comic book series to the dignitaries. NMPB has brought out third series of comic book, Professor Ayushman Returns, which is continuation of earlier series where Professor Ayushman returns to India after being struck in USA due to COVID-19 pandemic. Thank you. Today's inaugural function is marked with a momentous milestone
in presence of Honorable Chief Minister of Goa, Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, and this august galaxy of ministers from all over India. May I now invite Dr. Tanuja Nesri, Director, All India Institute of Ayurveda, to exchange Memorandum of Understanding with Rosenberg's European Academy of Ayurveda, Germany, represented here by Mr. Mark Rosenberg. This memorandum is to strengthen and further develop cooperation between the parties to study traditional systems of medicine and to set up a collaboration in the field of Ayurveda. Thank you, Dr. Tanuja. Thank you, Mr. Rosenberg. We're sorry for this interruption. May we move on? We have with us one of the senior most face of Government of Goa, Honorable Shri Shripad Naik, Union Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways, who has also handled responsibility as Minister of Ayush. May I request him to speak a few words. Honorable Shri Shripad Naik. नमस्कार। नवे वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 के इस इनागुरल फंक्शन में मंच पर उपस्थित गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा के हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे जी, गोवा के आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावड़े जी, उत्तर प्रदेश के माननीय आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा जी, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर श्री चेतन सिंह जवरामा जी, मंच पर उपस्थित आयुष के सेक्रेटरी माननीय राजेश कोटेचा जी, विज्ञान भारती के माननीय श्री सुनील आंबेकर जी, नेशनल सेक्रेटरी विज्ञान भारती के श्री प्रवीण रामदास जी, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, मंच पर बैठे हुए आयुष इंडस्ट्री के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित
सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, प्रदेश से आए हुए 60 कंट्री के सभी रिप्रेजेंटेटिव, भारत के कोने कोने से आए हुए सभी आयुर्वेदा प्रेमी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं कि आप जहां बैठे हुए हैं, जहां स्थित है, ये मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरा फर्ज बनता है कि फिर एक बार आप सभी का स्वागत करें। भाई और बहनों, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का इतिहास आपके सामने मेरे पूर्व वक्ताओं ने रखा। 2002 में शुरू हुई यह वर्ल्ड कांग्रेस की यात्रा कैसे कैसे यहां तक कैसे पहुंची, उसका इतिहास पूरा आपके सामने मेरे पूर्व वक्ता में आपके सामने रखा हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसी वक्त उन्हें पहला सबसे बड़ा जो काम किया कि जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस चल रही थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने घोषित किया था कि आयुर्वेदा हो, आयुष हो, बाकी सभी पैथी हो, ये हमारे इंडियन पैथी है और उसको बढ़ावा देना ये हमारा फर्ज है। इसलिए उन्होंने घोषित किया कि इसीलिए एक नया मंत्रालय बनाने का काम उन्होंने हाथ में लिया और डिक्लेयर किया। तुरंत 6 महीने के बाद ये आयुष मंत्रालय बना के आज जिस तरह से आयुष का विकास, आयुर्वेदा का विकास जिस तरह से आज हो रहा है, ये सब उन्हीं के कारण है। और इसलिए आप सबकी ओर से फिर एक बार उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं। इसके बाद में 2 वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई, कलकत्ता में हुई, उसका उल्लेख विज्ञान भारती के हमारे पदाधिकारियों ने किया। उसके बाद में गुजरात में हुई और आज मेरे खुद के स्टेट में हो रहे हैं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आयुर्वेदा ये क्या है, मैंने कहने की चीज नहीं, आप तो सब लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से इस विज्ञान को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, और सोच तो वही थी। यहां के एक संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने एक पसायदान लिखा है। इस पसायदान में उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं खाली इंडिया के, भारत के लिए नहीं है, लेकिन पूरे देश को जो कुछ भारत के पास जो कुछ अच्छा है वो हमें देना है। और इसी तरह से जो कुछ अच्छा भारत ने उपस्थित किया, निकाला, रिसर्च किया, जो पूरे देश का देने का जो काम किया, ये आज भी वो बरकरार कर हमारे सामने खड़ा है। नया उदाहरण तो यही है, 2015 में जो यूनाइटेड नेशन में जो योग के बारे में रिजोल्यूशन पारित हुआ और योग आज पूरी दुनिया में आज चल रहा है, लोग उसकी मांग कर रहे हैं। यही तो है ना कि योग के बारे सबको अच्छी सेहत मिले, सब दुनिया पूरी वर्ल्ड सुखी हो। यही तो हमारे पूर्वजों का विचार था और आयुर्वेदा के साथ साथ ये विचार सभी दुनिया में पहुंचाने का काम मेरे ख्याल से वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कर रही है। मैं उनके सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। आज 9वां वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हम यहाँ ले रहे हैं। मुझे याद है कि पहली जो दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे विज्ञान भारती के संगठन मंत्री श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी सहस्त्रबुद्धे उसमें थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। उसका बीच में गए 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, आज भी वो हॉस्पिटल में उसका उल्लेख हो गया है।
इतने कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने जिस तरह से विज्ञान भारती को फिर इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस को जोड़ा और आयुर्वेदा को पूरे दुनिया में पहुंचाने का अच्छी तरह से सभी को साथ लेके काम किया है। और इसीलिए इसके बाद में जो कुछ आज हम इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आयुर्वेदा की वर्ल्ड में स्थिति देख रहे हैं कि आज जो हम चाहते थे कि पूरे दुनिया में आयुर्वेदा जाए, इसी प्रयास जो इसी के लिए जो प्रयास चाहिए वो आयुर्वेदा कांग्रेस कर रही है। गोवा प्रदेश को तो आप जानते हैं, एक शांति प्रिय स्टेट है, सभी तरह की सुविधाएं गोवा में है और कई सालों से पहले आयुर्वेदा भी यहां अच्छी तरह से उसका आयुर्वेदा का प्रेजेंस था। इस संकुल को जो नाम दिया है दादा वैद्य करके, मैं उनका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि आयुर्वेदा की ताकत क्या है। और ये इतना सब होते हुए भी इतने सालों से हम पीछे क्यों रहे हैं? आयुर्वेदा को ऊपर लाने की कोशिश हर तरह से आप लोगों ने की है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक छोटी सी जोत, छोटी सी चिंगारी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस ने रखी, यहां कुछ भी नहीं था, उसके साथ साथ भी आप लोगों ने जो प्रयास किया, हमारे वैद्य परंपरा यहाँ है, हमारे वैद्य यहाँ है, अनेकों ने इस आयुर्वेदा के लिए पूरा जीवन इसके लिए दे दिया और इसी के बदौलत आज आयुर्वेदा पक्के इस पर बुनियाद पर खड़ा है और आज तक जो प्रवास हुआ है उनके परिश्रमों के कारण है। उन सबको मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूं। मित्रों, गोवा आयुर्वेदा में बहुत आगे था। जैसा जिसका नाम मैंने दादा वैद्य जी का जो नाम लिया, तो आयुर्वेदा में कितनी ताकत थी इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब गांव में कोई ऐसी तो ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा नहीं थी, वे साइकिल पे बैठ के जो कोई उसको बुलाने आता था वही जाते थे। ऐसा ही एक बारिश की रात थी और एक आइलैंड में वो उनको लेकर एक बेटा, उसके पिताजी का बेटा उसके घर में गया, बोला पिताजी बीमार है, आपको आना है। 11 बजे के बाद वो उसके साथ कम से कम 7-8 किलोमीटर के इसके लंबे डिस्टेंस में साइकिल के साथ चले गए। वो नाव आइलैंड होने के कारण नाव में बैठ के उसके घर गए। उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, उसको कल सुबह बुला दिया उसको और उन्होंने उसको देखा, परखा और दूसरे दिन आने के बाद उसके हाथ में एक नोटों का बंडल दे दिया और बोला कि उसको मेडिसिन कुछ मत दे दो, ये बंडल उसके हाथ में दे दो और बताओ कि जिस आदमी से आपने पैसा लिया है तो उसका पहले वापस करो, आपका जो डिसीज है, आपका जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आयुर्वेदा खाली मेडिसिन नहीं है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों ने किया हुआ एक चमत्कार है और इस चमत्कार के लिए सभी दुनिया को उसका फायदा देने के काम मेरे ख्याल से आप सब लोग कर रहे हैं। और जब उन्होंने अपने पिताजी को जब नोटों का बंडल दे दिया और कहा कि ये ऐसा डॉक्टर ने दिया है, तो वो उसके बाद में मेरे दूसरे दिन से उसकी प्रकृति ठीक हुई कि रोग किस तरह से आते हैं और किस तरह से उसका निवारण करना है। ये ताकत जो है आयुर्वेदा में इतनी है, ये कहने का मेरा इसका मतलब था। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, गोवा निश्चित तौर से हम सबके प्रयास से, मैं जब 7-7.5 साल आयुष में था, हमारे सेक्रेटरी राजेश जी कोडे जी, उनकी पूरी तरह के सहयोग था। सभी ने सहयोग देने के बाद जो आयुष का आज तक काम हुआ है, बहुत उन सबका उसमें सहयोग है, योगदान है। और आज हम ये सब लेके आगे जा रहे हैं। आयुष आज 60 कंट्रीज इसमें शामिल हुई है। अगले आने वाले 2 साल के बाद मेरे ख्याल से हम 100 का आंकड़ा पार करने का हमारा कोशिश रहना चाहिए, वो निश्चित तौर से रहेगी। गोवा बहुत निसर्ग संपन्न प्रदेश है। हमारे आयुष मंत्रालय के प्रयास से हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री के हाथ कर कमलों द्वारा होगा। नया एयरपोर्ट का भी काम बनेगा। उसके साइड में सिंधुदुर्ग में और एक इंस्टीट्यूट हमने लाया है
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए कि यहाँ जो निसर्ग संबंधता है, यहाँ का जो सह्याद्री में जो मेडिसिनल प्लांट है उसका सृजन हो और नए तरीके का प्लांटेशन हो, जो जो वनस्पतियाँ हमें चाहिए तो यहाँ उसका उत्पादन हम कर सकते हैं, रोजगार भी इससे और उससे दे सकते हैं। इसी तरह से जो कुछ गोवा में हुआ है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हुआ है, वेलनेस सेंटर का भी काम अच्छी तरह गोवा सरकार ठीक तरह से काम कर रही है। और बोलने का मतलब यही है कि हम सब और थोड़ा जोर लगाए तो निश्चित तौर से आने वाला समय ये आयुर्वेदा का हो जाएगा और जो प्रयास आपने इतने सालों से लिए हुए हैं उसका फल निश्चित तौर से हम सबको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की जय। Thank you very much, Honorable Shri Shripad Naik. We have with us such a personality who is strong advocate of Ayurveda, who patrons Ayurveda, who himself is from the same fraternity, same field, who has a special vision for Goa with respect to health, along with all the other fields. A dedicated, disciplined, determined, young and charismatic leader who has taken a keen interest in making this event happen and who paid attention to all the nitty-gritties so that everything goes on well. The Chief Minister of Goa, Honorable Dr. Pramod Ji Sawant, I kindly request him to deliver his inaugural address in this 9th World Congress, World Ayurveda Congress and Expo, Ayurveda Expo. नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। For 9th edition of the World Ayurveda Congress, along with me, Sri Sripad S.O. Naik, the Minister for the State, Tourism and Ports, Shipping and Waterways. My colleague in Government of Goa, Minister Sri Vishwajit Rane, Minister Sri Govind Gavade, Sri Chetan Singh Jayaramanji, Minister for the Health and Family Welfare, Medical Education and Research from the Government of Punjab, Sri Dhyanshekar Mishra Ji, Minister for the State for Ayush, Food Security and Drug Administration from Government of Uttar Pradesh, Sri Vaidya Rajesh Koteja Ji, the Secretary for the Ministry of Ayush, Sri Sunil Ambekar Ji, the mentor of Vigyan Bharati, Dr. Shekhar Mande Ji, the President of Vigyan Bharati, Dr. Rohit Sane, MD of Vaidya Sane Ayurved Laboratory, Sri Ram Sharoff, Director of Charak Pharma, Sri Arvinda Varchesve Ji, MD of Sri Twata Limited, Dr. E. and Nilkamal Mosa, Dr. Vaidya Rakadaman Ji, Ayurved Vaishala, Sri Gulraj Bhatia, the President of Healthcare, and all the other dignitaries on dais, Dr. Jai Shankar Narayan Ji, he is the Managing Trustee of World Ayurved. Other dignitaries on a stage, off the stage, and all my friends and media. सबसे पहले आप सभी को देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट रेट 75 और गोवा मुक्ति के 60 साल गोवा एट रेट 60 इस पावन पर्व पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जीवनदायिनी मांडवी नदी तथा विभिन्न प्रकारों की जीव संपदा से प्रफुल्लित वेस्टर्न घाट के गोद में बसा इस गोवा राज्य में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ के मंत्रमुग्ध करने वाले समुद्र तट, अंतर्मुख करने वाले जंगल, खेत खलियान और शांति और भक्ति को आकर्षित करने वाले मंदिर तथा प्रार्थना स्थल गोवा की कीर्ति को बढ़ावा देते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनाऔषधम। इसी उक्ति को यथार्थ बनाते हुए इस परशुराम भूमि गोमंत भूमि में औषधि वनस्पतियां और जड़ी बूटियों का
एक समृद्ध भंडार ये कहना उचित होगा। मैं विज्ञान भारती और आयुष मंत्रालय का भारत सरकार को ऋणी हूं। उन्होंने गोवा राज्य सरकार का इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन का हमें अवसर दिया, हमें मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आज 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के उस उद्घाटन समारोह के ऐतिहासिक क्षण पर मैं गोवा की जनता के ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा राज्य का मुख्यमंत्री तथा स्वयं एक वैद्य होने के नाते मुझे इस समय एक अभूतपूर्व ऊर्जा और आनंद प्राप्त हो रहा है कि गोवा राज्य में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। पिछले 2-3 महीनों से इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में सभी कार्यकर्ता, सभी संस्थाएं जिस तरह से लगी है, मुझे लगता है इस आगे आने वाले 4 दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पांस सभी लोगों से इस कार्यक्रम में मिलेगा। सर्वप्रथम मैं विज्ञान भारती का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। लास्ट 8 वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस उन्होंने जिस तरह से 18 साल से आयोजन कर रहे हैं और आयुर्वेद पूरे देश में और विदेश में उसका प्रचार और प्रसार आप सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप हमेशा के लिए आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार पूरे देश भर और विदेश में लगे हुए हैं। इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जिस तरह से 4 दिन का आयोजन का साइंटिफिक सेशंस और बाकी वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो रहा है, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स सभी तरह से बड़ी मात्रा से यहाँ पे आयोजन में लगे रहेंगे। Once again, I welcome the international delegates, those who are participating from 35 countries for this World Ayurveda Congress. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has positioned India at a greater level by making the world aware of our treasure of knowledge. We as a stakeholder of Ayurveda and allied medicine shall remain grateful to Modi ji for setting up of Ayush Ministry for the first time in India's independence. His consistent efforts have led to observing the 21st June every year as the International Day of Yoga. The United Nations has adopted this day for the well-being of for the humanity, and more than 180 nations performing yoga together on this day. I also congratulate Honorable Prime Minister for his vision to grant the Ayush visa to the people from around the world to visit India for Ayush-based treatment and wellness. We have been also fortunate that Sri Sripad Naik was the first Minister of State for Ayush, and his efforts for propagating Ayurveda, Yoga, Siddha, Unani and Homeopathy are indeed noteworthy. With the continuous support of the central government, and Goa State has got the honor of having second All India Institute of the Medical Science Ayush Hospital. This hospital also undergraduate and postgraduate PhD course wherein the local Goan students will have 50% of the reservation in admission. Ayurveda, in my opinion, is the biggest ambassador of brand India in the world arena. We all perform the various roles as a student, teachers, researchers, practitioners, manufacturers, distributors, etc. And being the stakeholders in the field of Ayurveda, it is our duty to propagate this system of medicine. Being an Ayurvedic practitioner myself, I have supported the endeavor of making Goa as a prominent place for the wellness tourism. We have started the Ayush Wellness Center at all primary health centers in Goa and have posted the Ayush doctors at these places.
Ayurveda shows us the path to live the healthy way of life. As the Ayurveda practitioners, our motto is Swasthasya Swastha Rakshanam Aturasya Vikara Prashavanam. To maintain the health of healthy individual and to treat the disease of the patient. Ayurveda follows the concept of Dinacharya, which emphasizes on the natural cycle like waking, sleeping, working, meditations, etc. And Rutucharya, and which emphasizes on managing the dietary intake, sync with the seasonal change, are the important for health. Ayurveda is also emerging and getting the recognized at a global level, and I urge the Ayurveda practitioner to explore the opportunities. The people are also giving the great importance to Ayurveda and meditations in terms of the pre-pregnancy, the pregnancy and post-pregnancy period to have the healthy progeny. The Garbha Sanskar is being referred as commonly, is in itself exclusively area that can be concentrated upon and pursue as a successful career by the practitioner. Through the discourse and interactions in these 4 days, we must spread the word about the greatness in our traditional system of medicines, which can show a way the world create the healthy and awakened society. I am aware that we see today in the next 4 days the result of unstinted support and hard work of several individuals and institutions. I thank all of them from the bottom of my heart. To all the delegates, and you should not only participate in the Ayurveda Congress and with your mind and soul, but also find a time to explore this iconic place. I extend my best wishes for this great event. हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तुम्ही सगळ्यांनी ह्या 4 दीस जावपी आयुर्वेद काँग्रेसीक मोठ्यान वांटो घेवचो आनी हांगा जावपी एक्सपो समेस्त गोंयकारांनी तो पळोवचो. मैं सबसे लास्ट में फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं याद करता हूं जो आज एक्चुअली जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऑफ विज्ञान भारती जयंतराव सहस्त्रबुद्धे, जो उन्होंने ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में होनी चाहिए इसके लिए उनका प्रयास था और आज ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में हो रही है. लेकिन जयंतराव सहस्त्रबुद्धे जो पायनियर था इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का, जो गोवा में होने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो आज इस कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पा रहे, खुद उनको ट्रीटमेंट ले रहे हैं. मैं आज उनको याद कर रहा हूं, लेकिन उन्हीं के वास्ते एक कार्यक्रम इतना बड़ा यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है. आगे आने वाले 4 दिन में हम इस आयुर्वेदा पूरे सभी देश विदेश में हम माननीय मोदी जी की जो थीम है, जो हर दिन हर घर आयुर्वेदा और हर दिन हर रोज हर एक के लिए आयुर्वेदा, यही थीम आगे लेके आयुर्वेदा को आगे लेके जाएंगे. मैं फिर एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स देता हूं. उन्होंने आयुर्वेदा डे मनाने के लिए पूरे देश भर में उन्होंने नेशनल आयुर्वेदा डे भी मनाया और हर दिन हर घर आयुर्वेदा पहुंचाने के लिए बड़ा योगदान मिनिस्ट्री आयुष मिनिस्ट्री का रहा. जय हिंद, जय आयुर्वेद. Thank you so much, sir, for this encouraging words and this inaugural address. Thank you once again. I now request Trustee World Ayurveda Foundation, Shri Ranjit Puranik, to deliver words of thanks. This will be followed by National Anthem. Please don't leave the auditorium. Friends, it's been a very long morning. We're certainly aware of the entire fact. I would begin my vote of thanks for the journey that World Ayurveda Congress in Goa
has taken so far and foreseeably is now going to be taking in the next 4 days, and for a phase that ushers in a very progressive Ayurveda sector in not only Goa, but also India. I would begin by thanking our chief patron, the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. It was sometime in the month of April that we met Dr. Pramod Sawant. In the first sentence itself of us uttering that we proposed to have the World Congress in Goa, he had already said yes. And since then, the Goa government, all the ministers, all the ministries, whether it's the health ministry, whether it's the arts and cultural ministry, notably the GTDC, this is the entire infrastructure that is at their behest. And I must, on behalf of not only World Ayurveda Foundation, but all the delegates and the Ayurveda sector as a whole, must thank the chief patron, Dr. Pramod Sawant, to ensure that World Ayurveda Congress becomes a reality right here. And this is indeed a great credit to him and his support to Ayurveda as such. I would fail in my duty to also acknowledge Mr. Sri Sarbananda Sonowalji, the Union Minister for Ayush. A single letter from Sarbanandji has ensured an interest nationwide from all health and Ayush ministers to come to Goa. In the next few days, all of us are going to meet the health ministers from Jharkhand, Manipur, as well as Rajasthan. And countless more telephone calls have come in, and countless more could not make it because of either legislative or some other engagements. But the kind of interest that has been generated by another chief patron of 9th World Ayurveda Congress, Dr. Sarbanand Sonowal, is completely awesome. I would again acknowledge right here the absolute and total ownership of the World Ayurveda Congress, its success that has been undertaken by the Ministry of Ayush, Government of India, is especially led by the Rajesh Kotecha and his entire team of Ayush officials. I think it has been a tremendous amount of boost. They have ensured that we did not only do our best, but did a little more. And this particular program, this heavy program guide that you have, this guide that was explained by my senior colleague, Professor Anup Thakur, all of this is a creation of this kind of encouragement. I must thank the ambassadors, the ambassadors who have come all the way from Delhi to witness what Ayurveda sector is all about, to see the Arogya Expo, and also, probably, in all probability, also take Ayurveda overseas. The international delegates who have graced this entire opportunity, this forum, need to be acknowledged because at a very short notice of only 3 and 4 months, they have ensured that their itineraries had Goa on their mind. Chief Ministers, sir, ministers on the dais, your time is well spent. Your entire support has been acknowledged by, today our registration is crossing 3,700. And over 130 international students studying Ayurveda in India have been facilitated by Ministry of Ayush and are also present here. There are traditional healers who have come here, there are farmers who have come here, and the entire caucus, I will call it, of discussions on all dimensions related in the Ayush sector is all because of your encouragement and support. Friends, I would fail in my duty to thank the Ayurveda physicians, the scientists, the scholars, the universities, the councils, not only just related with Ministry of Ayush, but even of the allied ministries who have ensured that this forum is growing and growing every particular edition. And we look forward to see a greater World Congress in times to come. Dr. Mahindra Munchpara, Minister of State, Ministry of Ayush, would also be joining us tomorrow. And he is a very keen observer of Ayush sciences, an absolute encouragement in talking to him and seeing his ideas to real ideas in public health. And I'm sure this is going to augur well in times to come.
Again, I would fail in not acknowledging my colleagues on the dais and off the dais and in the entire Arogya Expo, that is the corporate sector in Ayurveda, who have this time embraced the World Ayurveda Congress Forum with both hands. And their unstinted support, continuous support, and growing support is what sees World Ayurveda Congress growing and growing. Friends, with these few words, I know there are many people that I have not thanked, and I'm sure I have missed many agencies also, like the civil services, the police, the security agencies, the municipal corporation of Panji City, the health department, the protocol department, members of the press, the electronic media, Doordarshan, NIC, all of them have contributed their might to ensure that we see this inaugural function not only live televised, but also well spread out. The local organizing committee of the World Ayurveda Congress in Goa has worked very hard. Almost 116 outreach programs have been completed by them, and they have reached through all their camps over 20,000 patients. Chief Minister, sir, this effort that even you have actively supported and engaged in social media, this effort is going to augur well to the free clinics that have been made available in Arogya Expo. I am sure as a culmination, all of this, we are going to have a great 4 days of not only network, but a knowledge festival that all of us are going to walk back with. Thank you once again. I would like to thank all the ministers on the dais, Govind Gaudeji, your Arts and Culture Department, Vishwajit Raneji, the entire Health Department. I am sure the officials might complain that we have bothered them a bit much, but trust me, they have been there for us and have taken good care of us, and that's something that really counts. Shripadji, in spite of not feeling all that well, in spite of feeling ill, you have still shown that the Ayush flame is not only in you, but shining bright. We wish you an early recovery to yourself, and thank you for your time to come here. And once again, on behalf of World Ayurveda Foundation, we are continuously mentored by Vigyan Bharati. We are continuously mentored. We have continuously been monitored by Jayant Rao to ensure that we always excel. And I can now realize, Sunil Tambeji, meeting you in person, that the kind of mentorship, the kind of encouragement that you've given World Ayurveda Foundation to grow, we can see that. I do thank you from your very busy schedule that you have spared time and come across. Thank you one and all, and we look forward to following the Chief Minister immediately after the national anthem for the inauguration of the Arogya Expo. So that's a program that will now follow. Thank you. Before we start with national anthem, I have an announcement to make. There is Principal's Conclave at